Now, this thing, as you have seen, this one is a particular kind of uh, arrangement of condenser that we have. This is called a reflux condenser. Okay, this thing, where you add a condenser on top of a boiling tube. What it does is that it does not allow any vapors to go out. Instead, it cools them and sends them back. Where do we use it? We use it when we have volatile substance that are being heated. So you don't want them to leave the liquid. You want them to stay in there. But because they're volatile, they readily evaporate when you heat them. So we use a reflux condenser when we want to make sure that they stay in the solution, do not evaporate, and complete the reaction. So as you can see, ethanol is a very volatile substance. So that is why we are using a reflux condenser. A problem with this one is that it's using a bung here, which means that it has closed this thing, and a closed vessel with being heated and which has vapors is a recipe for disaster, because the vapors will simply create a lot of pressure, and as you know, when gas has higher pressure, high temperature, particles are moving faster, they create higher pressure and they can create an explosion in this case, which is why using this bunk is wrong. Another precaution you should take is that you're basically heating ethanol here, and because you're using a heat source, they haven't specified which heat source it is. But we know that there are multiple heat sources that are there. Though they can use a Bunsen burner, they can use water bath, and they can use an electric heater. So in this case, because it's ethanol, which is flammable substance, we will use water bath or electric heater. Bunsen burner or spirit lamp is dangerous because it has a naked flame which can, and ethanol if leak can catch fire because of that. All right, so name apparatus say that is a condenser. We use it to cool vapors coming in. So this is a condenser. What is the purpose? It is to cool vapors. Okay, so or to send them back or something like that. That's what this thing is. So आप इसको थोड़ा elaborate कर सकते हो to cool vapors and send them back to boiling flask or something like that. Okay. So it's always a good idea to elaborate on your answers. Identify two errors in the student separation. One point, where will we not have to elaborate when they use the command word state. So when you're stating things, you can just put a one or two word answer. When you're naming things, one or two word answer is fine. But when a vague command word like what is used or identify or these kind of things, you should try to elaborate. Identify two errors in the student's apparatus. So कौन से दो error है हमारे पास यहाँ पे? पहला error तो ये कि उन्होंने बंग लगाया है, ठीक है? अब बंग क्या करता है कि it will create a pressure. So that is why. So you can write that the bung shouldn't be there, okay, or bung shouldn't be placed or something like that. You don't have to detail it. Second thing is कि यहाँ पर water in यहाँ से हो रहा है, which means this is the coldest part and this is the warmest part. तो आप यहाँ से वेपर को भेज रहे हो, तो you wanted to reach the cold part first ताकि वो जल्दी कूल हो जाए. वो ऊपर जाते जाते पहले ही गर्म पानी में से गुजर रहा है, यानी कि उसके जो कंडेंसर है वो उसको उतना ज्यादा ठंडा नहीं कर सकता. That is why we should reverse this. So in reality, we should have this thing. We should reverse them so that this place is warmer and this place is colder, so the vapors can be cooled down easily. So we can say that reverse. We can say that क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि water in and out should be reversed. ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर what we have answered is we have identified the errors and given a solution. Examiner just wanted us to identify them. So if you just say कि bung लगा हुआ है which shouldn't be there, या कह दें कि water in and out are wrongly placed, that's also right. But this way, when you have explained कि अच्छा solve कैसे करना है problem को, it's a better way of explaining it. Okay, state power Bunsen burner should not be used, as I've explained it already. Ethanol is flammable, so that's good enough. What should we use instead of Bunsen burner? We can use water bath or we can use electric heater, as I've already explained. Name the process that the student uses to separate ethanoic acid from mixture after heating. तो यहाँ पे mixture में हमारे पास
aqueous solution है, ethanoic acid बन जाएगा because ethanol when it also oxidizes it converts to ethanol, ethanoic acid. But to separate it, we will need to use a process that relies on boiling point of these things. So that is distillation. लेकिन सिर्फ normal distillation won't be right. We should prefer to write fractional distillation. Although examiner will give you a mark for distillation, but a better chemistry answer is fractional distillation. Ethanoic acid is heated with another sample of ethanol and a catalyst of sulfuric acid. यहाँ पे क्या होगा कि ethanoic acid का ethanol से reaction बन रहा है. So ethanol will provide ethyl and ethanoic acid will provide ethanoate, and that is how we get ethyl ethanoate. And this catalyst sulfuric acid is basically going to help us in all that process. Obviously, a byproduct that is formed is water, but because the examiner has asked you for organic product, हम उसका नाम नहीं लेंगे. All right. Apparatus shown is used for electrolyte sulfuric acid. Remember that this is dilute sulfuric acid. When dilute acids are electrolyzed, it is water that breaks down, which means that we will be getting hydrogen and oxygen, because water breakdown करेगा तो hydrogen and oxygen ही देगा, and that's exactly what we'll get. So at the anode, we are going to get a gas that is forming negative ions or coming from negative ions, which is oxygen. So because they've asked you to name them, you should write the full name. You should not say O2. ये लिखना गलत है. You should write oxygen. Test and observation. Test for oxygen is that it relights a glowing spring. Okay? These keywords should be memorized and they should be written as it is, because this is a very good answer. Although if you rephrase them in your way and it doesn't change the meaning, that's perfectly fine. Name the gas that collects at the cathode. So the gas that comes from water and comes from the cation is hydrogen. So that's what we'll write. We will say that we will get hydrogen gas. And again, you should name it because they ask you for a name. You should write the formula. Test and observation. This one is different from oxygen in the sense that oxygen relies on glowing flame, and this one is going to use burning flame. So it gives pop sound with a burning flame. So right there. So in this 3 more experiment, different electrolytes, so वो electrolytes उसे change कर दिए, और electrolytes के यहाँ पर उसने electrode change नहीं किए. They're still carbon. So that means the second rule of electrolysis will apply, and the second rule was that least reactive ion discharges except concentrated halogen ion, concentrated halide. This is the second rule of electrolysis. So that means यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से ions हैं और उनमें से कौन से वाला discharge होगा और वो कौन सा product देगा. So sodium iodide में हमारे पास H positive है, OH negative है, Na positive है और I negative है. So because it's concentrated, this will discharge, and on this side this will discharge. क्योंकि ये रूल सिर्फ एनोड पे अप्लाई होता है. इन कैथोड वी यूजुअली गो विद द लीस्ट रिएक्टिव आयन नहीं, क्योंकि हाइलाइट तो कभी नेगेटिव आयन बन नहीं सकता. सो हाइड्रोजन इज द प्रोडक्ट एट द कैथोड एंड iodine is the product at the anode. Do not say iodide because that is not the product that we get. It is the iodine which will be getting over there. Okay, again you should write iodine full name because the examiner asks you for a name. Formula नहीं लिखना चाहिए. All right, concentrated aqueous copper 2 sulfate. Again, what ions do we have? We have H positive, OH negative, copper ion, and sulfate ion. Okay, so copper ion is less reactive than hydrogen ion, so we will get pure copper metal. And in hydroxide and sulfate, hydroxide is less reactive, and that will provide oxygen. So oxygen gas is the one going to come out, and these are matching the descriptions or observations that they've told us. Copper is pink and oxygen is colorless gas. Next is saying concentrated aqueous sodium chloride हो रहा है और उन्होंने हमें बता दिए ये products हैं, तो हमें observation बतानी है. Chlorine is going to give us green fumes. So green fumes is a good option. You can also write yellow green gas या yellow green bubbles or something like that. ठीक है? Bubbles आप fume की जगह पे लिख सकते हैं और color identify करना भी जरूरी है. Remember, so far we have gotten 5 marks है. और हाइड्रोजन की ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर उसने हमें दी हुई है, तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे कि बबल्स ऑफ कलरलेस गैस.
But even if we do not have to copy, हमें पता है कि hydrogen does not have a color, and because it's a gas, we are going to see bubbles or effervescence or something. Okay. We don't get MCQs anymore in the paper 4, but हमारा paper 1 भी है, so it wouldn't hurt to practice these. A student burns 4.8 grams of an element X in excess oxygen, so we are burning 4.8 grams. That's the mass. The mass of oxide is 8. What does that mean? That means out of this 8, 4.8 is the metal, which is X, and oxygen is going to make the remaining 3.2. You get that's oxygen. Okay, what's the empirical formula of the oxide? Now, it doesn't have to be oxygen gas, so I should write just O. Empirical formula के लिए मुझे mass चाहिए, so X और O की ratio लेंगे 4.8 and 3.2. X का AR 24 है, उसने बता दिया हमें, और oxygen का AR 16 है. Again, this is not oxygen gas, this is O, oxygen element. That is why we'll divide it by 16. So this thing is going to give me, I think, 0.2. And this one is also going to give me 0.2. So if I find a ratio, it's 1:1, unless my calculation is wrong. Okay, so that's the method, and that's how we figure this out. So empirical formula is going to be X1 O1. Chromatogram shows the results of chromatography using mixture Z. Up, देखें, chromatogram में there are two ways to identify a solution. The correct technical method, which if the examiner wants you to write it, ठीक है, जब उसने आपसे रिटर्न आंसर मांगने हैं तो आपने RF वैल्यू वाली बात करनी है. आपने बताना है कि things that have the same RF value are the same, and you will write the formula of RF value. But because it's an MCQ, we just want to identify. So जब आपने identify करना है तो RF value की तरफ नहीं जाएंगे. We will use the horizontal line test. Technically, they're both the same thing, but horizontal line test is faster. It gives us the answer at much faster pace. So they're saying which of the dyes does Z contain? So Z में 3 है, तो आप 3 lines यहाँ पे बना लें. Although you can just observe them by eye, but even if I do this, I will know that one is there. Then I know that this one is also there. ये I1 की दूसरी वाली है. For some reason ये यहाँ पे plot नहीं कर रहा है उसको. And third one is this one, which is a horizontal line. So these 3 horizontal lines are going to tell me. ये again some misprinting or something. ये screen उसको draw नहीं कर रहा. Anyways, so this is present in 4. This is present in 1, and this is also present in 1. So that means 1 and 4 are both present. 1 के दोनों spots इसमें हैं, और 4 का भी एक ही spot है जो उसमें है. So that means 1 and 4 is our answer. So horizontal line test makes it faster, easier to solve it, but you will not write about it if you have to write it. आप RF value लिखेंगे जब exam में need to solve. Okay, what's happening here? We are adding X is zinc, so zinc is extra, HCl is limiting agent, and you are measuring the volume of hydrogen gas produced. Okay. The student makes a change to one of the conditions, then repeats the experiment. So experiment 1 say experiment 2, and you can see that the volume of oxygen produced is higher, and not just that, the reaction is actually faster. How do I know that? Because this line becomes flat over here and this line becomes flat over here. So this has produced more oxygen. So there's more oxygen as well as less time. So that means the only factor that affects both of these things is concentration. So there is a higher concentration. Remember, there are multiple factors that affect the rate of reaction. There is temperature, there is pressure for gases, there is the surface area, particle size जिसको हम कहते हैं, so surface area for solids only. Then there is a catalyst for any kind of reaction, and lastly there is the concentration. And all of these 4 affect the time taken, and concentration affects time as well as the amount that is produced, the output. So because both of the things are changing, we will know that this is concentration has been increased. So a greater concentration of HCl is used. Okay? Because that is what's going to make it faster. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि why isn't it a greater mass of zinc being used? That is because zinc was already in excess. So अगर आप एक excess चीज को और extra कर देंगे तो उससे rate of reaction में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, a student passes it backwards and forward over heated copper. So we know copper will react with some gas in the air, and that gas is oxygen. So copper is pink, it will convert to copper 2 oxide, which is
black. Okay, so that's what we will see, and it's going to use 20% of the gas that is there. We have 50 cm cube of gas, so that means 20% of that is oxygen, which is 10 cm cube. So 10 cm cube is used up, so you are left with 40 cm cube of this. And this is an experiment that we can use to identify what percentage of air is oxygen. Although they don't ask you for this kind of reaction in the exam anymore, but it's still a good reaction if you want to devise an experiment जिसमें आपने बताना हो कि how can we measure the amount of oxygen that's in the air. So this is one technique of doing that. You burn a relatively less reactive metal so that it takes more time and it's safer. Although you could have burned magnesium or any other metal as well. हाँ वो थोड़ा सा तेज reaction होता है. ठीक है. So seal tube, heat and metal reacting will react, oxidize and produce that. So this confirms that there is 20% of oxygen there. All right, so this is the the experimental design question. And what they're doing is they're asking you to vinegar contains dilute ethanoic acid. Okay, different brands of vinegar contain different concentration. Okay, you are provided with two different brands as well as the apparatus and chemical normally found. Describe how you would carry out to find out which of the two brands contains the higher concentration. Higher concentration का मतलब क्या है? Faster reaction. ठीक है, तो this is a experiment for rate of reaction. अब ethanoic acid we already know is a weak acid, लेकिन weak acid को weak acid से ही compare कर रहे हैं. So what are characteristic properties of weak acids that we can use here? So we know that acid plus metal gives us hydrogen gas. Obviously there's salt as well, but this is the one that we can measure out. We also know that acid plus carbonate, so some metal carbonate gives us carbon dioxide again. Other things are there, but this is something that we can use up to identify in the rate of reaction. Whichever produces more carbon dioxide or whichever produces it in less time is going to be the higher concentration. So these two are there. Obviously, ethanoic acid can react with other things as well. Ethanoic acid, हमारा metal oxide से react कर सकता है. Ethanoic acid metal hydroxide से react कर सकता है. But the problem with both those reactions is that they do not provide any gaseous product which will give us visual results. Visible results हमें इन्हीं दोनों reaction से मिलते हैं क्योंकि bubbles आ रहे होते हैं. We can identify them. Similarly, mass reduce हो रहा होता है as the bubbles go out. So we can use measure mass, we can measure the change in volume. So visible results identify this experiment much faster than using titration or other results which do not provide a visible result. Water or salt produce होता है उसमें तो वो इतना ज़्यादा useful नहीं है for this rate of reaction procedure. Okay, so that's what we will do. We will take any of these. So you can take, let's suppose you can say that take magnesium and add it to both of them, and that will the amount of hydrogen gas that you get उससे हमें पता चल सकता है. अच्छा, अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे टाइट्रेशन ही करनी है, ठीक है, सो टाइट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आप कहेंगे कोई एक एल्की आप पिक कर लेंगे. यू कैन से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पिक करें. सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप फिर बताएंगे कि गोनिकल फ्लास्क में एसिड डाल लें और एल्कली प्यूरेट्स है उसमें ऐड करें. उसमें ऑब्वियसली आपको इंडिकेटर चाहिए होगा. जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो एल्कली भी ज्यादा यूज करेगा. So there are many different methods, but these two are better in my opinion. You can still go with acid plus base in the aqueous solution, and you can do titration and जो भी जल्दी ज़्यादा base use करेगा वो ज़्यादा concentration. So any of these methods will do. So if you were to write it, because it's a 5-mark question, we will need to put a lot of detail in that. So हम experimental detail में let's suppose हम acid plus metal वाला reaction. This is the first method. So if I start with the first method, I'll say that you should take equal mass of metal. वो metal कौन सा होगा? I would take magnesium, but you can take any other metal which is fairly reactive. You can take calcium. You can take. I wouldn't suggest taking sodium and potassium because they're very reactive. So magnesium is a good choice, I would say. So you take equal mass of metal, add acid to it. Okay, add acid to it in conical flask. Okay. और आपके पास गैस कलेक्ट होगी. ठीक है, सो अब आप यहाँ पर डिपेंड करते हैं क्या मेजर कर रहे हैं. यू कैन से मेजर एंड रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड, और यू कैन से दैट मेजर एंड रिकॉर्ड change in
mass of conical flask. ठीक है, both of them are going to help us. So whichever shows a greater change identifies, shows higher concentration. Okay, so that's a method for this one. This applies to both 1 and 2, except 2 में आपको मैग्नीशियम की बजाय आप मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज करके बाकी सारे का सारा सेम ही होगा. Second method, which is in fact this one, acid plus base, अगर आप titration करते हैं, so you can say that take maybe 25 cm cube of solution in conical flask and then add sodium hydroxide. आप कोई और भी एक्वस एल्कली बता सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है. ठीक है, of equal concentration or same concentration. Concentration is important. It should be same to each from a burette, and you will obviously use indicator. So यहाँ पर हमें indicator बताना चाहिए. आप कह सकते हैं कि add phenolphthalein. ठीक है, phenolphthalein का कलर चेंज हमें पता है. ठीक है, तो record the volume of alkali जो भी आपने एल्की यूज किया, इन दिस केस सोडियम हाइड्रोक्साइड, added when the color changes. Color change आप बता सकते हैं. Color change in the case of phenolphthalein is colorless to pink. If you're using something else, like if you're using a liquid solution, or although that's not a good choice, methyl orange is a good choice. If you take methyl orange, तो उसमें color change is different. So it depends. Whatever indicator you use, whatever alkali you use, whatever method you use, there's a lot of freedom here, which makes this kind of question relatively hard and interesting as well. So you will say okay, greater volume corresponds to greater concentration, yeah, higher concentration. So these methods identify for us different ways of comparing two acids which might be the same. ठीक है, अच्छा, अब ये केमिकली बहुत अच्छे मेथड है. इस सब में एक चीज आपने जरूर बतानी है कि आपके पास जब यहाँ पर ये सारा मेथड जब आप गैस कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपने टाइम का भी फैक्टर जरूर लेना है, क्योंकि दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन, so time using a clock or something, stopwatch या बता सकते हैं. अच्छा, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, और टाइम अप कैसे करते हैं कि at regular intervals. Regular intervals is important. जब हम टेबल बनाते हैं तो हम उसमें ये सारा कुछ लिखते हैं. और another thing is that अगर आप गैस कलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप एसिड और मेटल वाला रिएक्शन कैसे करेंगे? So if you don't want to do that, then you know that metal will simply dissolve when it reacts with acid, right? So you can say that keep adding metal until all of it is dissolved. So उसमें आप देखेंगे कि जो एसिड ज्यादा मेटल डिसॉल्व करेगा वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला. So that is another method that you can use to identify which of these two acid samples have higher concentration. ठीक है? So it's a very good reaction to compare concentration of different acids. So I hope you have learned from this. Okay, so okay, this one is based on moles, so let's go through it. Calculate the mass of impure copper. Basically उसने क्या किया, उसके पास impure copper है जो उसने एक empty container में add किया था. Empty container was 5.72 when it added 7.45 हो गया. हमें उसने अभी यही बताया कि कितना उसने acid add किया है, कितना उसने impure copper use किया. I don't have a calculator, so I would suggest कि आप लोग मुझे आंसर्स बताते जाएं. So 7.45 minus, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं 7.45 minus 5.72 equals 1.73. So that is the mass that we have of impure copper. Remember, this is impure copper. We do not know how much of this is copper and how much of this is something else. When you are having this kind of reaction, you have to make sure that the impurities that you have do not react with anything that you react with the solution with, ताकि हमें अच्छा solution का आंसर मिल जाए. अब यहाँ पे उसने कहा है कि कॉपर का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि ये इंप्योरिटीज अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगी तो हमारा रिएक्शन फ्लॉड होगा. तो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड.
कि नाइट्रिक एसिड से उनका रिएक्शन नहीं होना चाहिए इम्प्योरिटीज का. Similarly, he is using the copper nitrate produced to react with potassium iodide. Obviously, potassium iodide is colorless when it dissolves in water. We know it's a very good reducing agent, but iodine, which is brown in water, so हमें कलर चेंज आइडेंटिफाई हो जाएगी कि बेसिकली वो क्या करेगा, ये NO2 भी ब्राउन होती है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो रिएक्शन हो रहे हैं, दोनों में हम impure metal ऐड कर रहे हैं. The pure part of that, the copper part of that will react, produce brown gas and copper nitrate, which will further react with potassium iodide to make brown solution. ठीक है. आगे वो कहता है कि name the container with solution J be made. Solution J क्या है? Solution J हमारे पास ये चीज है कि यहाँ पर जो भी चीज उसने बनाई है, आयोडीन, नाइट्रिक एसिड, कॉपर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, जो कुछ भी है, notice that this nitric acid will react with copper again. So there is these two reactions are feeding off each other. और उससे ultimately हमारे पास iodine gas ही बनेगी. Okay, so and that iodine gas and this NO2 brown vapors and all that, they will identify कि reaction कितना हुआ, कितनी जल्दी हुआ और कितना ज़्यादा हुआ. All right, so here's the reaction. They add impure copper. They would add excess concentrated nitric acid to it, stir it. Obviously, इस चीज में उसको करना चाहिए. आपके पास जब भी किसी दो चीजों को आपने मिक्स करना है, तो the best way to do that is to use क्या हो सकता है, कोनिकल फ्लास्क. कोनिकल फ्लास्क में आप उसको रिएक्ट करवाएंगे, जो सोल्यूशन फाइनल बचता है उसको कहते हैं कि मेड अप टू 250 cm3. दिस टेल्स मी कि हम उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं. व्हेनेवर यू वांट टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर, उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. So that is where you should do that. Whenever you want to change volume of a solution, so volumetric flask करनी चाहिए. इससे क्या होता है कि आपके पास number of moles of solution does not change. Number of moles of whatever you have. For example, यहाँ पे हमारे पास nitric acid है, copper iodide है, iodine है. उसके number of moles change नहीं होंगे, but उसकी concentration change होगा. उनके volume and concentration both will change. Okay. The student transfers 25 cm of that J solution. So J solution है, उसमें से उसने ये निकाल लिया. नाइट्रिक एसिड है उसके अंदर जिसका वो रिएक्शन करवा सकता है, और यहाँ पर आयोडीन भी है, तो आयोडीन का भी रिएक्शन होगा कि आयोडीन फर्दर रिड्यूस हो. तो दिस रिएक्शन दैट दे डू. सो यहाँ पर the titration that they're doing has given us these results. So we have to identify what these results are, so we can easily identify them ताकि हम फिर कैलकुलेशन इसको बेस पे करें. Okay, final burette reading in the first case is 22.4 and initial is 0.0. Notice that you have to make sure your number of decimal places is the same in all of them. So this is 22.4. Second one is 48.2 and starting one is 24.7. So this one is going to be, if I'm not wrong, 23.5. Can anybody confirm, please? While I'll do the last one, 22.8. And the starting value is 10.2. Notice कि इसको हम ऊपर से नीचे को रीड करते हैं, हमेशा burette को ऊपर से नीचे रीड करते हैं, because the starting point, the top is always 0 और उससे नीचे volume कम होता है. ठीक है. The volume of the solution inside is not determined. We are measuring the volume of solution that has been taken out, which is why we read it from top to bottom. So कभी भी इसको नीचे से ऊपर नहीं पढ़ना, ऊपर से नीचे पढ़ना. Okay. So इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास 22.6 आ जाएगा. Using this we can see that 22.4 and 22.6 are the ones that are closest, so we pick them both and we take the average of them both, we add them up, divide by 2, we get 22.4. Another way you can do that is 22.4 यहाँ पे है, 22.6 यहाँ पे, right midway you have 22.5, it's your average. Are you going to calculate number of moles of Na2S2O3 in the average volume of this much Na2S2O3? अब यहाँ पे आप ये ख्याल रखें कि आपके पास यही चीज थी जो कि ब्यूरेट में थी, ठीक है? Because they have told you this is put in the burette. Notice this, which means say you have the concentration, you have the volume, so you will use number of moles using N equals CV 22.5 times 0.1. One important point: this is cm cube and this is in dm cube, so you will divide it by 1000 as well. So if you do that, you will get 2.25 into 10 power minus 3 moles or 0.00225. Next is saying use your answer to D. This answer, the number of moles of sodium thiosulfate, and equation 3. Equation 3 हमें उसने दे दी है.
to calculate number of moles of iodine. आयोडीन ये है और Na2S2O3 ये है। इनकी रेशो अगर आप देखें मोल्स की तो 2:1 है, which means अगर ये 2.25 into 10⁻³ है तो ये उसका हाफ होगी, तो ये 2.25 का हाफ हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था इसे राउंड ऑफ कर दिया, which we will not do that, उसको हमने डिवाइड बाय 2 करना है, 0.0011। Again, I will need somebody to confirm this answer. क्या होता है ये rounds off नहीं होगा। अब ये हमारे पास है 25 से इंक्लूड में, और वो कहते हैं कि 250 में बताएंगे, वो बिकॉज हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, तो 25 में अगर 0.001125 है तो 250 में उसका 10 टाइम्स होगा, तो दैट मींस एक जीरो कम हो जाएगा, तो 00 की बजाय 0.1125। अच्छा, ये हमारे पास आ गई है आयोडीन इन 250 से इंक्लूड। वी कहां से आई थी? ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक क्लास में पहले से थी। इसका मतलब है कि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन वाज 0.01125। ये हमारे पास आयोडीन है, ओके, 0.01125। अच्छा, अब वो कहते हैं कि यूज दिस टू फाइंड मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो अगेन वी यूज द सेम मेथड। हमारे पास ये एक रेलेवेंट चीज है और एक आयोडीन रेलेवेंट चीज है। मोल रेशियो इज 2:1। दिस इज द मोल्स दैट वी नो and this is the moles that we do not know, so we multiply by 2 और हमारे पास वापस वही आंसर आ जाएगा 0.0022022। This is the amount of copper nitrate that is produced। so copper nitrate का कॉपर के साथ रेशियो 1:1 है, तो इसका मतलब है अगर ये 0.0225 है तो ये भी 0.0225 होगा। Notice that this is the number of moles that we are getting, so we used titration and we did back calculation to find out what this is, okay। So using this we can see कि okay 0.0225 moles हो तो उसका mass कितना होता है? Mass equals moles into AR, so ये हमारे पास mass आ जाएगा। So when we do this we get 1.429 grams। Now here's the thing, हमें शुरू में हमारे पास कितना mass था? 1.73 which was to 2 decimal places। तो हमारे पास ये भी जो आंसर आएगा ये 2 decimal places से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास मेजर करने की ताकत ही नहीं है, हमारे पास वो मटेरियल वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, इसलिए हम इसे 1.43 लिखते हैं। तो that was 1.71, subtract 1.43 and you will know what amount of copper was actually there was 1.43 and 0.28 was extra। ठीक है, ये एक्स्ट्रा थी, ये इम्प्योरिटीज थी हमारे पास। तो अगर हम इनको रेशियो निकालना चाहें, परसेंटेज मास निकालना चाहें, so we know that 1.43 out of 1.71 was the pure metal। ठीक है, तो इसको हम रेशियो निकाल लेंगे, 1.43 डिवाइड बाय 1.71 परसेंटेज में अगर हम करते हैं तो ये 83.6% प्योर सैंपल बनता है। तो वी हैव अ स्टैंडर्ड टेबल है, ऑल्दो अब उन्होंने टेबल काफी चेंज कर दी, ये 5 साल पुराना पेपर है, तो अब टेबल्स इस तरह के स्टैंडर्ड टेबल्स नहीं आते, थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, but the tests are the same, the method is the same। let's see what's happening there। so हमेशा हम टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं और फिर हम कंक्लूड करते हैं, ये हमारी थिंकिंग है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और ये हमारा एक्शन है। तो कलरलेस सॉल्यूशन आ रहा है तो आवर थिंकिंग इज डेफिनेटली दैट नो ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट या नो ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट, तो आप इसमें से कुछ नहीं। अच्छा, फिर उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था, ये हमारा रिएजेंट है, ये हमारा रिएजेंट है। रिमेंबर रिएजेंट इज एनीथिंग दैट यू यूज टू टेस्ट समथिंग, and it's telling me that aluminum, zinc or calcium ion is there, so there's a common element in all of them that they give us white precipitate। you write PPT in the exam, you will get marks for this, you don't have to write the full precipitate। आगे वो कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम जिंक हो सकता है, कैल्शियम नहीं हो सकता, that means this is soluble, so we'll say precipitate dissolves, because calcium अगर होता तो वो insoluble रहता, so that is one way that tells us the acid। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हमने उसे मिक्स करके ऐड हीट कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हीट हो गई है, तो इसका मतलब है अमोनियम आयन है, तो इसका मतलब है अमोनिया गैस है। लेकिन दैट्स नॉट आवर ऑब्जर्वेशन, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन विल बी दैट कलरलेस बबल्स या बबल्स ऑफ कलरलेस गैस या एफरवेसेंस भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज़ अमोनिया गैस इज गोइंग टू कम। वी कैन नॉट से कि ये अमोनिया गैस है, हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन में तो कभी भी अमोनिया गैस नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि कलरलेस बबल्स ऑफ गैस
that turns lime सॉरी लिक्वस ब्लू, और उससे आप जब आपने क्वांटिफाई कर दिया अब आप अमोनिया लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपने टेस्ट बता दिया तब आप ये बता सकते हैं कि ये अमोनिया निकलेगा। ठीक है, white precipitate forms when you add aqueous ammonia। तो aqueous ammonia white precipitate हमारे पास एल्यूमिनियम ऑप्शन होती है, जिंक ऑप्शन होती है। calcium ion does not react with aqueous ammonia, so we will not write that। And then it's saying कि वो insoluble है, so aluminium is the one that is insoluble, zinc is the one that is soluble in both, so we write that। आगे वो कहते हैं कि सल्फेट है, सल्फेट हमें पता है कि उसका टेस्ट कैसे करते हैं। द reagent we use is, सबसे पहले हम डाइल्यूट एसिड ऐड करते हैं, क्यों? वी वांट कि अगर कोई कार्बोनेट है तो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम लिखेंगे कि ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फेट के टेस्ट के लिए हमें बेरियम ऐड करना है, तो बेरियम नाइट्रेट। रिमेंबर, सल्फेट के टेस्ट के लिए बेरियम सॉल्यूशन और हैलाइड के टेस्ट के लिए सिल्वर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर सकते हैं और बेरियम नाइट्रेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नाइट्रेट अगेन इसलिए क्योंकि वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। सो बेरियम आयन विल रिएक्ट विद सल्फेट टू गिव अस व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, और यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन में व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखेंगे, आप बेरियम सल्फेट नहीं लिखेंगे। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं और दो आयन्स हैं, एल्यूमिनियम आयन है, सल्फेट आयन है और अमोनियम आयन है। नेगेटिव आयन एक ही है और पॉजिटिव आयन दो हैं, तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम सल्फेट है व्हिच विल बी AlSO4 और Al का 3 यहाँ पे आ जाएगा, सल्फेट का 2 यहाँ पे। एंड अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का 1 उधर चले जाएगा और सल्फेट का 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और हमारे पास दो सॉल्ट्स बन जाएंगे। This is the last question for this one। They're saying when metal M is added to aqueous copper 2 sulfate, the temperature rises। इसका मतलब है रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस इज एक्सोथर्मिक क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो इट टेल्स मी दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और ये हमारे पास उसके टेम्परेचर के पॉइंट्स आ गए, इनको हम ग्राफ करेंगे। ग्राफ करते हुए आपने बस एक चीज का ख्याल रखना है कि व्हेन यू ग्राफ इट, these points must be written in 4 small dots। So if you give me a minute, I'll just plot it on Excel and then copy that value for you। Okay, so we have the graph here। हमारे पास दो different lines बनेंगी, so you have to make sure कि आप दोनों को इस तरह से join करते हैं। एक straight line होगी horizontal और एक ऐसे slanted line। Use the graph to determine the mass m required to produce a maximum temperature। So अब यहाँ पे आप देखेंगे m mass है और mass हमारा x axis पे है, तो x axis पे हमें उसको देखना है। अच्छा, स्केल थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो जब हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आएगा तो वहां पर हमारे पास क्या मैस है, लेट्स सी। 5 डिग्री सेल्सियस ये है, 5 डिग्री सेल्सियस पर चेंज हमारे पास आएगा a little more than 0.8, so I think 0.9 हमारा आंसर है। Use a graph to determine the maximum temperature rise which will occur if 1.5 gram m was used। 1.5 ग्राम जब आप यूज कर रहे हैं तो ये आपका मैस आप यहाँ से लेंगे और इस मैस को आप देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। तो 1.5 is a little to the right, again ये ग्राफ को इशू कर रहा है, तो 8.1 I guess 1 और 8.2 डिग्री सेल्सियस is the good answer for this। So just then we have calculated number of moles of copper sulfate in 25 cm cube of this thing। अब ये totally unrelated है ग्राफ के साथ, लेकिन हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें concentration गिवन है, हमें number of moles चाहिए। number of moles is concentration to volume, and again we will need to make sure that our units are consistent, so 25 over 1000। so that is going to be 2.7 times 0.025, 0.0675 हमारे पास number of moles आ जाता है। Then they're saying एग्जाम में आप इसको क्लियर लिखिएगा, इस तरह निकलेगा। Use a graph to tell us the mass that reacts completely with this much। तो हमें number of moles पता है, number of moles से हमें mass निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर का चेंज आएगा यहाँ पे? मैक्सिमम 8.8 का चेंज आएगा। ठीक है, तो 8.8 पे हम mass देखेंगे
कि यहाँ पर मैच कितना 8.8 यहाँ पे फर्स्ट टाइम रीच करें, तो ये यहाँ से हम आपने कैलकुलेट नहीं करना, आपने 0.0675 मोल्स को यूज करके एमआर को यूज करके कैलकुलेट नहीं करना, यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर। सो आई थिंक इट इज 1.6। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि यूज होगा। ऑलराइट, use the equation and your answer to D1 and D2 to calculate relative term mass matter। हमें पता है कि इसका mass 1.6 ग्राम यूज हुआ है और इसके m का mass 0.6 ग्राम यूज हुआ है, ठीक है। तो m का mass 1.6 ग्राम है और इसके नंबर ऑफ मोल 0.0675 है, इतने थे या दैट मींस कि जितने इसके मोल्स हैं उतने उसके मोल्स हैं, क्योंकि मोल रेशियो 1:1 है। So that means mass 1.6 grams है, लेकिन number of moles is 0.0675. So if number of moles is given, mass is given, mass over number of moles tells me what MR that thing has. ठीक है? या AR in this case क्योंकि ये metal है, so AR. So 1.6 divided by 0.0675. That tells me it is 21 as the AR. ठीक है, तो whatever that metal is going to be, वो गलती है कि यहाँ पे 0.675 3.7 आ रहा है, तो बस हम यहाँ पे AR उसका 23.7 लिखेंगे। You don't have to round it off क्योंकि ये AR है, AR can be in decimal places because it's an average। अगर हमारे पास mass number मानता तो वो पॉइंट्स में नहीं हो सकता, तो तब हम कहते कि 24 है, but because this is AR you can easily round it off and that is the paper।